Shall we start now? We play the Urdu one. Yeah. ईश्वर के सामने बैठने में भी बंदा का यही फर्ज है। पवित्रता का मसला खासकर हिंदुओं में बहुत आला पैमाना पर रखा गया है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल अब ये हो गई कि सिर्फ ख्याल ही ख्याल बाकी रह गया है। क़वाइद सब भूल गए, सिर्फ नहाना याद रह गया। इसकी बुनियाद इस तरह पर पड़ी कि लोगों का ख्याल पैदा हुआ कि वो पाक और लाजवाल हस्ती जिसमें हमको जाना है हर चीज़ से मुबर्रा और मुनज़्ज़ड़ है, उसमें पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। गोया हमने अपने पाकीज़गी का मेयार कायम कर लिया। वो पाकीज़गी कैसी जो मल, विक्षेप और आवरण से पाक है। हमारी हस्ती में ये तीनों बातें मौजूद हैं। जहाँ पर पाकीज़गी होगी वो चीज़ इन तीनों चीज़ों से मुबर्रा होगी। हमारा ख्याल इस दर्जे की पाकीज़गी की तरफ राग़ब हुआ। ज़ाहिरा आसमान से उसके नकल उतारने लगे, यानी जिस्म को मलने और साफ़ करने लगे। गंदे मुकामात की सफाई का ख़ास ख्याल रखा। फिर क्या हुआ कि वो पाकीज़गी जिसको हमने अपना मेयार माना है हमारे ज़ाहिरा तरीक़ों से मन पर असर डालने लगी। बढ़ते बढ़ते ये नौबत आई कि उसमें भी शुद्धता दौड़ने लगी। ये बात हमारी मुतवत्तर हरसे तक जारी रही और साथ ही साथ हमारा नुक्ता निगाह में वो मेयार भी कायम रहा जिसने हम उस पाकीज़गी को दोबाला कर दिया। एक तो हमारे कर्म मन की शुद्ध के लिए राग़ब थे, दूसरे इस मकसद ने सोने पर सुहाग का काम किया। अब क्या था, पवित्रता दौड़ने लगी, मन शुद्ध होने लगा, ख्यालात अच्छे पैदा होने लगे और ये सब हमारे असल मकसद हासिल करने में मददगार हुए। हमको दोनों तरफ से फ़ायदा पहुंचा। बातनी दौड़ हम लगा चुके थे, ज़ाहरी दौड़ से भी हमको उस काम में मदद मिली। गोया दोनों चीज़ें मकसद के हासिल करने में मददगार हुई। जब इन दोनों चीज़ों ने एक दूसरे से हम आहंगी हासिल कर ली तो क्या हुआ कि ये सब मिल मिलाकर बज़ात खुद एक ताकत बन गई। उस ताकत ने हमारा रास्ता और भी सीधा कर दिया। फिर क्या था, दोनों बाजुओं से हम पैर फैलाकर उड़ने लगे और हर चीज़ शुद्ध होने लगी। देखिए इस पवित्रता ने हमको मकसद हासिल करने में कितनी मदद दी। आप धर्मेश हिंदी वाला पढ़ोगे? या श्योर। पवित्रता का मसला खासकर हिंदुओं में बहुत ऊंचे पैमाने पर रखा गया है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल अब ये हो गई कि सिर्फ ख्याल ही ख्याल बाकी रह गया है। सिद्धांत सब भूल गए, सिर्फ नहाना याद रह गया। इसकी बुनियाद इस तरह से पड़ी कि लोगों में ख्याल पैदा हुआ कि वो शुद्ध और सनातन हस्ती जिसमें हमको जाना है हर चीज से रहित है, उसमें शुद्धता ही शुद्धता है। इस तरह हमने अपनी शुद्धता का आदर्श कायम कर लिया। ऐसी शुद्धता जो कि मल, विक्षेप और आवरण से रहित है। हमारी हस्ती में ये तीनों बातें मौजूद है। जहां पर शुद्धता होगी वो चीज इन तीनों चीजों से पूर्ण रहित होगी। हमारा ख्याल इस दर्जे की शुद्धता की तरफ बढ़ने लगा। बाहरी तौर तरीकों से उसकी नकल उतारने लगे, यानी जिस्म को मलने और साफ करने लगे। गंदगी की सफाई का खास ख्याल रखा। फिर क्या हुआ कि वो शुद्धता जिसको हमने अपना आदर्श माना है हमारे बाहरी तौर तरीकों से मन पर असर डालने लगी। बढ़ते बढ़ते ये नौबत आई कि उसमें शुद्धता दौड़ने लगे। ये बात
हमारी काफी समय तक जारी रही और साथ ही साथ हमारे नुक्ता निगाह पॉइंटेड अटेंशन में वो आदर्श भी कायम रहा, जिससे हमें उस शुद्धता की प्राप्ति में बहुत ही मदद मिली। एक तो हमारे कर्म मन की शुद्धि के लिए मुड़े थे, दूसरे इस मकसद ने सोने पर सुहागा का काम किया। अब क्या था, पवित्रता दौड़ने लगी, मन शुद्ध होने लगा, ख्यालात अच्छे पैदा होने लगे और ये सब हमारे असल मकसद हासिल करने में मददगार हुए। हमको दोनों तरफ से फायदा पहुंचा। अंदरूनी दौड़ हम लगा चुके थे, बाहरी दौड़ से भी हमको उस काम में मदद मिली। इस तरह दोनों चीजें मकसद के हासिल करने में मददगार हुई। जब इन दोनों चीजों ने एक दूसरे से समरसता हासिल कर ली तो क्या हुआ कि ये सब मिल मिलाकर खुद एक ताकत बन गई। उस ताकत ने हमारा रास्ता और भी सीधा कर दिया। फिर क्या था, दोनों बाजुओं से पर फैला कर उड़ने लगे और हर चीज शुद्ध होने लगी। देखिए, इस पवित्रता ने हमको मकसद हासिल करने में कितनी मदद की। I'll read in English. The ideal of purity held by Hindus in particular is indeed very high, but now in its degenerated state, it has gone down to such an extent that it exists merely in imagination. All the principles thereof have been quite forgotten, and bathing and washing are the only remnants left now. The principle of purity was based on the thought that the eternal and pure existence which we have to enter into is entirely free from all contaminations. It is perfectly pure. This highest standard of absolute purity, free from all impurities, mala, distortions, vikshepa, and coverings, avarna, was taken up for the ideal. Our being is contaminated with all these and hence is far below the ideal. Thus, our attention being directed towards the attainment of purity of that highest level, we began to initiate it in all outward ways, looking particularly to the cleaning of the body. The external ways adopted for the purpose began to cast their effect upon the mind, and thus the internal purity too began to develop. This continued process, supplemented by our firm attention upon the ideal, contributed greatly to the attainment of the highest purity. The process thus being accelerated, real purity began to flow in all through, and the mind began to get purified, producing good thoughts, which helped us further in our pursuit. Thus we are doubly benefited. We had already resorted to means for the internal purification, and now the external ways too began to help us a good deal in the work, and both combined together helped us immensely in the attainment of the objective. When both these gets harmonized with each other, it becomes in itself a power which makes our path all the more smooth, and we go on soaring higher and higher. Thus, our feeling of purity helps us so efficiently in the attainment of the ideal. This is simple and clear. We'll go ahead. हमने अपने नियमों में संध्या और उपासना का सबसे अव्वल नियम रखा है। इसकी वजह ये है कि हम ऐसा करने से उस ताकत को हासिल कर रहे हैं जिस पर कि हमको कुदरतन किसी वक्त आना है। इसके मुताल्लिक़ एक
बात और बताता हूँ, वो ये कि जब धाराएं जात से रवां हुए तो उन्हीं की रवानी ने मतमताकर ठोसता की हालत पैदा कर दी। अणु, परमाणु और मुख्तलिफ शक्ल के ज़ारात बनकर तैयार हो गए और इनका अजहार अपनी अपनी शक्ल में होने लगा। वो चीज़ इनमें रवां रही जिससे गर्मी भी पैदा हुई, जिस पर के ज़िंदगी का दारो मदार है। इस सूरत में मुख्तलिफ शक्लें ज़हूर में आ गईं और मुख्तलिफ काम होना शुरू हो गए। गर्मी बाकी रही और ये अब तक कायम है। इसका जोर नीचे की तरफ ज़रूर हो गया। लोग सवाल करेंगे कि ये ऊपर नीचे का ख्याल क्या। जिस वक़्त हम सबसे ऊंची चीज़ का तसव्वुर बांधते हैं तो नीचे का ख्याल भी कायम हो जाता है। अलावा इसके जब हम बेहतर चीज़ से आए हैं तो इसके बाद वाली चीज़ कम बेहतर या नीची कही जाएगी और इस वजह से हम उस चीज़ को सबसे बड़ा और ऊंचा तसव्वुर करते हैं। यानी बुलंदी और पस्ती हमारे जहन में फ़ौरन दाखिल हो जाती है। मगर जिस वक़्त नीचे का जोर घटता है तो वही चीज़ जो परमाणु पर गर्मी डाल रही है और ये काम उसके बराबर जारी है, ज़ारात को ऊपर की तरफ मुखातिब करने में मददगार होती है। यानी जहाँ पर से ये चीज़ें नुमायाँ हुई है और उसी हरकत से जो इसमें गर्मी पैदा होती है उसको हल्का कर देती है। हल्की चीज़ का ये खासा है कि वो हमेशा ऊपर को उड़ती है। उसका ऊपर आना ये मतलब रखता है कि वो उस तरफ को जाना चाहती है जहाँ के उसका मंबा है। अब ये चीज़ जिसमें धाराओं के असरात से काफ़ी तहरीक पैदा हो गई है, अपने असल की तरफ उड़ना चाहती है। ये चीज़ इंसान के हिस्से में ज़्यादातर आई है। इसलिए जब नीचे का रस्सी कट जाती है यानी नीचे का रुझान बंद हो जाता है तो खुद इंसान के दिल में परवाज़गी और अपने असल में पहुँचने का ख्याल अवध कर आता है। यही वजह है कि संध्या उपासना करने को जी चाहने लगता है। इस गर्मी में और उस गर्मी में जो सूरज के असर से पैदा होती है बड़ा फ़र्क है। उस गर्मी सूरज वाली का आगाज़ फिर भी बमुकाबिला उसके मादियत से होता है और इससे भारी होती है। इसका आगाज़ असल ही से है जिसमें मादियत नहीं। मेरे ख्याल में अगर इसको ज़ूर कह लिया जावे तो तर्जुमा ज़्यादा मौजू होगा, मगर ज़ूर में ये गर्मी छुपी हुई रहती है और आफताब में ज़ाहिर तरीक़े में उस गर्मी में और इस गर्मी में जो महज कहने मात्र है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो यानी सूरज वाली गर्मी महज आंच है और ये ज़िंदगी को बढ़ाने वाली और उसका ख़याम रखने वाली है। अल्फाज दोनों जगह एक ही है, मगर अफसोस ये कि ऐसी चीज़ें जल्दी इतहा बयान में नहीं आती। जहाँ तक हो सका ख्यालात को अल्फाज में बांध दिया गया है, मगर इसका फ़र्क अनुभव पर मुनहसर है। यानी इस गर्मी और उस गर्मी का फ़र्क हमारा तरीक़ा हमने अपने नियमों में संध्या और उपासना का सबसे अव्वल नियम रखा है। इसकी वजह यह है कि हम ऐसा करने से उस ताकत को हासिल कर रहे हैं जिस पर के हमको प्राकृतिक रूप से किसी वक्त आना है। इसके संबंध में एक बात और बताता हूँ, वो ये कि जब धाराएं जात से प्रवाहित हुई तो उन्हीं के प्रवाह ने मुड़ मुड़ कर ठोसता की हालत पैदा कर दी। अणु, परमाणु और विभिन्न शक्ल के तत्व बनकर तैयार हो गए और अपनी अपनी शक्ल में प्रकट होने लगे। धाराओं का प्रवाह इनमें कायम रहा जिससे गर्मी भी पैदा हुई जिस पर की जिंदगी का आधार है। इस सूरत में विभिन्न शक्लें प्रकटन में आ गई और विभिन्न काम होना शुरू हो गए। गर्मी बाकी रही और अब तक कायम है।
इसका जोर नीचे की तरफ जरूर हो गया। लोग सवाल करेंगे कि ये ऊपर नीचे का ख्याल क्या है। जिस वक्त हम सबसे ऊंची चीज का अनुमान लगाते हैं तो नीचे का ख्याल भी कायम हो जाता है। अलावा इसके अब हम बेहतर चीज से आए हैं तो इसके बाद वाली चीज कम बेहतर या नीची कही जाएगी और इस वजह से हम उस चीज का सबसे बड़ा और ऊंचा अनुमान लगाते हैं। यानी ऊंच और नीच की समझ हमारे मन में फौरन दाखिल हो जाती है। मगर जिस वक्त नीचे का जोर घटता है तो वही चीज जो परमाणु पर गर्मी डाल रही है और ये काम उसका बराबर जारी है, कणों को ऊपर की तरफ केंद्रित करने में मददगार होती है। यानी जहां पर से ये चीज प्रारंभ हुई है और उसी हरकत से जो गर्मी इसमें पैदा होती है उसको हल्का कर देती है। हल्की चीज की ये खास बात है कि वो हमेशा ऊपर को उड़ती है। उसका ऊपर आना ये मतलब रखता है कि वो इस तरफ को जाना चाहती है जहां की इसका स्रोत है। अब ये चीज जिसमें धाराओं के प्रभाव से काफी गतिविधि पैदा हो गई है, अपने असल मूल स्रोत की तरफ उड़ना चाहती है। ये चीज इंसान के हिस्से में ज्यादातर आई है। इसलिए जब नीचे की रस्सी कट जाती है यानी नीचे का रुझान बंद हो जाता है तो अपने आप इंसान के दिल में उत्थान और अपने असल में पहुंचने का ख्याल जागृत होता है। यही वजह है कि संध्या उपासना करने को जी चाहने लगता है। इस गर्मी में और उस गर्मी में जो सूरज के असर से पैदा होती है बड़ा फर्क है। उस गर्मी सूरज वाली का उद्गम फिर भी इसकी तुलना में भौतिकता से होता है और इससे भारी होती है। इसका उद्गम असल ही से है जिसमें भौतिकता नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इसको ताकत या ऊर्जा कह लिया जावे तो अनुवाद ज्यादा ठीक रहेगा। मगर ऊर्जा में ये गर्मी छुपी रहती है और सूरज में जाहिर तरीके में। उस गर्मी और इस गर्मी में जो महज कहने मात्र है जमीन आसमान का फर्क है। वो यानी सूरज वाली गर्मी महज आंच है और ये जिंदगी को बढ़ाने वाली और उसको कायम रखने वाली है। शब्द दोनों जगह एक ही है, मगर अफसोस ये है कि ऐसी चीज की अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो पाती। जहां तक हो सका ख्यालात को शब्दों में बांध दिया गया है, मगर इस गर्मी और उस गर्मी के फर्क को समझने की प्राप्ति केवल अनुभव पर आधारित है। Yeah. Our first and foremost commandment relates to the proper observance of Sandhya and Upasana. By following it, we begin to attain power, which we have finally to attain naturally over a period of time. Another important point in this connection is that when the currents from the ultimate Zat, divine currents, began to flow, the flow by itself got twisted, creating a state of grossness, which led to the formation of atoms and subatoms, anus and paramanus, and many forms of elements that began to appear in their particular forms and shapes. The continuance of the flow created heat, which was the very basis of life and which gave further stimulus to existence. But though the heat remained in existence, its force got diverted downwards. One may be
at a loss to understand the real significance of the words up and down. When we conceive of the highest, our thought takes into account the opposite view too, that is of the lowest. Besides, when we have sprung up from that which is the greatest and the best, the level next to it will naturally be called lower or lesser in comparison. This brings into our mind the idea of high and low. When the downward tendency begins to get diminished, the very same thing which had been continuously pouring heat into the particles helps to direct them upwards, wherefrom their existence has started, and the heat created by the effect of motion makes it lighter still. A lighter thing always tends to rise upwards, or in other words, it moves towards its source. Thus, everything that comes into activity by the effect of the divine flow tends to fly towards the origin. Man has also inherited the same tendency. So when his downward tendency is checked, the thought of reaching the origin automatically revives in his heart. This is why we begin to feel inclined towards Sandhya and Upasana. There is an immeasurable difference between nature's heat and that caused by the sun. The former, which originates from reality, is totally devoid of materiality, whereas the latter, which originates from comparatively material source, is heavier. In my view, the former may more aptly be called as force or energy. In energy, the heat exists in a latent state, while in sun it is apparent. The sun's heat is mere warmth, while the other is the promoter and preserver of life, though the word used in both the cases is the same. It is regrettable that no adequate means of expression of such subtlest matters are available and possible. I have, however, tried my best to explain it through words as far as possible, yet the actual realization of the difference depends upon practical experience alone, Anubhava. So here this is pranasya prana, right? When he talks about the latent heat. No, he's not talking that. Pranasya prana, no, he's talking in a different context now. He's talking of origin, how the mind originates and all. Pranasya prana is the term given to the superfine divine force, which is a kind of a refined thought of a similar nature of subtlety as the divinity itself, that is used through the will of a man. The yogi is there. His mind is in contact with the divine presence and is absorbed in that. And with his willpower, he will direct the divine force into the heart of the person. That in that context, we are using it as pranasya prana. Okay. When it is used in the context of pranahuti. But that heat which he's talking is, he says it promotes life and all that. It is much subtler than the material heat which we are seeing. So he says it can be known only through practical experience, because the words actually do not convey the real sense. If you are thinking it is pranasya prana, that is up to you. I mean, it can be known only through practical experience. Okay, thanks. The next point is very significant. You see, which was earlier missed, the general tendency of the human mind, which is looking downwards, or which is the general tendency of the human mind is towards extrovert nature. That means it runs after sensual pleasures. It runs after objects. It runs after name and fame. It runs after
praises and self-esteem and all that. That is all outward only. That means sense objects only. So the tendencies of general humanity run towards having sensual pleasures or having name and fame and all that. They all come under the sensory pleasures only. Even craving for recognition and craving for respect, and all those things come under the concept of sensory. All the tendencies are in that direction. And here what happens in this system, the trainer using the power of will, which is backed by the divine will, which you said prana se prana, he gives a suggestion that this mental tendency is turning towards God. So the tendency is turned towards God. Earlier, which were turning towards all the external factors, like you see cinemas, clubs, name and fame, money and all that. These are all tendencies are towards that. Now the tendency is towards peace or the origin itself, towards God itself. Your tendency is turned towards God. That is the crux of the training of the system. So the trainer gives the suggestion, and that suggestion turns the tendencies of the mind of a person going towards sensory objects towards God, towards the origin. But the person also should be willing, that's why we have started running this course, to give them a background that this is for pure spirituality, is not for reducing your BP or solving your worldly problems and all. You want to become a real man, then only this system is relevant to you. Otherwise, there are so many other methods are there where people get peace and happiness and all that. We'll go to the next thing in Urdu. The concept of line of humanity and line of divinity is also linked to this one. The line of that means, yeah, the idea is like this. When you say the line of divinity is the evolution, that means all this world which you are seeing is a line of human being. The external world matter is the line of humanity. Divinity is the subtler presence of God underlying all that. God is present in everything. Like suppose I am there, you are there now, you are talking and reading about this book. But behind your intellect is God is there. So without the presence of God, your intellect cannot function. So that presence of God is the line of divinity, and that is the base of all the existence. So in yoga, what we are saying, this is there, run along parallel lines. We are trying to bring harmony between the line of divinity and line of humanity. Well, line of humanity means you can think in terms of the tendencies turning towards materialism. Okay. But in the case of suppose animals, plants and all that, they are in tune with divinity only. They don't have a mind to do bad things or do unnatural things. So only in the human case, we are not in harmony with the divine line actually. Rest of the creation, they're the plants and trees and ants, and they're all in tune with nature. But they cannot evolve towards God. Only man has got the unique position to evolve towards highest perfection. They have to pass through from plants and animals, and then human beings, and then better human beings, and then divine human beings, like that. Actually, sir, in the Hindi version, it is addressing that point better than what is conveyed in the English version in terms of the tendency coming into human beings. So it says, ये चीज इंसानों के हिस्से में ज्यादातर आई है, which is to say that human beings are like, the tendency is more in human beings. But in English, it says man has inherited the same tendency. So okay. I think it's trying to make a differentiation that animals and plants, they don't have that tendency to that extent as much as humans have. No, this is my thing, but unless we read and meditate, we will not be able to understand. Yeah. Whether now he says when the
when you cut the rope of the downward tendencies, then the desire to go back to the source comes. Whether that tendency to go back to the source is human or not, unless we spend a lot of time meditating. I don't know, you may be correct, but give me some time. Each one should meditate on its own. I was listening to this Telugu talk yesterday. Let me just tell it in Telugu. It's much easier for me. సార్ దాంట్లో అంటారు, నేను వదిలే గాలి మీరు పీలుస్తున్నారు, మీరు వదిలే గాలి నేను పీలుస్తున్నాను, అందరం అదే గాలి పీలుస్తున్నాము, ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే గాలి, ఇదంతా కనెక్ట్ చేసేది ప్రాణ. సో దీన్ని ప్రాణస్య ప్రాణ అంటారా? No. ఇక్కడ సారు ఎక్కడేదో జరిగితే మనకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని. No, the sir has given that example to make you understand, make us understand that everything is interconnected. That is the idea. Just like air we are breathing is the same air which you are breathing out. In the same way, our mind, which is producing thoughts and feelings, is also interconnected, and that is also in turn come from the same source. That is the idea which he wanted to convey on interdependence and all that. So pranasya prana is prana generally is the cause for the movement or motion and all that. Is the cause for the concept of time and also all that. But pranasya prana, we are using it for the pranahuti which is being given. Pranahuti, which is of the nature of thought, but it is the subtlest thought, as subtle as the origin or from the Kshob, when Kshob started. At that time, Babuji was in that state. So that pranahuti, that is pranasya prana, and he made it he made trainers to offer this pranahuti to all the general public, but the trainers have to, that is why it can be at different levels. But the general idea is the subtlest thought, which is akin to the divine vibration when the Shobha started, that can be taken as pranasya prana. Whereas the idea of that we are breathing air and all that, it used to drive home the concept that we are all interdependent. The mind is because of avarana, because of avarana is the avidya. Because of avidya, we feel that we are different from the trees, we are different from other people, we are different from animals and all that. Whereas logically, if you think, we know that nobody can live separately. Everything is interdependent. Everything is cosmically connected actually. Like suppose even if you see a tree or if you see an animal like a dog or a cow, you are able to say it is a dog or a cow. Suppose if all the animals in the world are dogs, it's very difficult to contrast that animal with other animal. The other animal helps us to recognize this dog is different or the horse is different. So to know, to name an animal like a dog or a horse, the other animals contribute to our understanding. So even every cognition is possible only because of the cosmic influence actually. So that idea explains it, and sir has given this idea of interconnectedness. It is all a matrix actually. So it's not the life force or something he's talking about. Life force is pranasya prana. You see, mind comes first, then later on prana. If you see the 5 sheets, the physical bodies, that means annamaya kosha, then pranamaya kosha. Prana is that prana. Then manomaya kosha, then vijnanamaya kosha, and then Anandamaya kosha. If you read the Swami Vivekananda's Jnana Yoga, you will get these concepts clear. He in the space itself, he talks about space, and then
there's a vibration developing in that space, and that vibration leads to prana or power, which is associated with motion. And the same prana helps us for our diaphragm to move, helps us for the food to get digested and get converted into all the body parts and all that. That is happening because of prana, circulation, the nervous energy. All this is due to the influence of that prana. And that prana is a part of Prakriti or matter itself. Prana is deeper than that. Is a subtlest thought. This is philosophy. Each one have to study and then know for themselves. But for our system, he is explaining very clearly. Everything is straightforward. When any trainer who is absorbed in, when he is conscious of the presence of the divine, and when he uses the willpower, he will be directing that divine force with which he is conscious and aware, and through the suggestions, which is nothing but application of willpower, the mind can be molded to be in tune with the line of divinity. That is the basic essence of the training of our system, actually. So that is why each person is different. Each person have different problems. Each person has different obstructions. Some people have certain notions which prevent their further progress. So that particular person requires that particular suggestion to help them come out of that prison. Actually, we are all imprisoned by certain prejudices and notions about race, caste, about neighbors and friends and in-laws and whatever. I mean, employer, employee, all these notions and assumptions and perceptions, they're all actually they are the cause of our prison or the network. And so for each person, separate suggestion has to be given. That's why there should be a close interaction between the trainer and the aspirant, so that the trainer has a role in ensuring freedom of the person from all these networks of prejudices and false assumptions. So there, when suggestion is using, he is using the prana se prana. We'll go ahead. तरीक़े में सबसे पहले यही किया जाता है कि अभ्यासी का नीचे की तरफ जो रुझान हो रहा है, तालीम कुंदा अपने असर से कमज़ोर कर देता है, ताकि अज्जा उस तरफ यानी ईश्वर की तरफ खुद मायल होने लगे। ये हालत मन के ऊंचे तबके की है, और वो हालत यानी नीचे की तरफ रुझान होना मन के नीचे तबके की है। ये फ़लसफ़ा है तालीम का और बुनियाद भी। ये चीज़ जो मैंने यहाँ बयान की है, बड़े बड़े फ़िलासफ़रों ने सोचने और गौर करने का मौका देगी। मज़मून मुख्तसर लिखा गया है। इस सिलसिले में एक बात और ज़िक्र कर देना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि एक मौके पर किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया है कि ईश्वर ने बंदे का जिससे हर क्यों का जवाब उसे मिल सके बंद कर दिया। वो दरवाज़ा क्या है? सोचने से पता चलता है कि वो पर्दा क्या है, जानने से ताल्लुक़ रखता है। एक शागर ने भी कहा है, तवांदर बलाखत बसाहेबान रसीद ना दर कुना बीचुन्ये सुभान रसीद। I'll read Hindi now. हमारे तरीके में सबसे पहले यही किया जाता है कि अभ्यासी का नीचे की तरफ जो रुझान हो रहा है, प्रशिक्षक अपने असर से कमजोर कर देता है,
ताकि कण उस तरफ यानी ईश्वर की तरफ अपने आप होने लगे। ये हालत मन के ऊंचे तबके की है और वो हालत यानी नीचे की तरफ रुझान होना मन के नीचे तबके की है। यह प्रशिक्षण का सिद्धांत तत्वज्ञान है और उसकी बुनियाद भी। ये चीज जो मैंने यहाँ बयान की है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स यानी दर्शन शास्त्रियों को सोचने और गौर करने का मौका देगी। विषय संक्षेप में लिखा गया है। इस सिलसिले में एक बात और जिक्र कर देना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि एक मौके पर किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि ईश्वर ने बंदे का दरवाजा जिससे हर क्यों का जवाब मिल सके बंद कर दिया है। वो दरवाजा क्या है? सोचने से पता चलता है कि वो पर्दा है। वो पर्दा जो है जानने से ताल्लुक रखता है। एक शायर ने भी कहा है, तवंदर बलाकत बसाहिबान रसीद, न दर कुना भी चुनिए सुबान रसीद। तात्पर्य यह है कि व्याख्यान विद्या और प्रभावशाली भाषणों में साहिबान, चीन का दर्शन शास्त्री, की प्रतिभा कोई भी प्राप्त कर सकता है, परंतु हर कोई ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता। Finish the whole thing, no? It's Urdu का खत्म करके then we'll go to English because it's Urdu का we stopped here and that's why I'm stopping the Hindi here. हिंदी खत्म तो उर्दू बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस पर्दे के बारे में सुनिए, वो क्या चीज है जो उसके असल राज जानने में रुकावट बन रही है। जिस वक्त हम ईश्वर का ख्याल बांधते हैं तो हमारी समझ एक दायरा बना लेती है और एक तरीके का दर कायम कर देती है। बस यही बंद है जो हर क्यों के जवाब नहीं देने देता। अब हम अगर कहीं इस ख्याल से बाज आ जाए और वो सीमा हमारे ख्याल से कहीं दूर हो जाए तो हम बारीक से बारीक बात मालूम कर सकते हैं। मगर इस दायरे के बाद एक दायरा और आता है जिसका अक्स ये दायरा है जो ऊपर बयान किया जा चुका है। जब हम इसमें घुस पड़े तो उस जगह यानी केंद्र की कैफियत नजर आ सकती है। मगर इन सीमा बंधनों का टूटना सिर्फ एक हालत में हो सकता है, यानी जब हम अपने कणों को किसी तरीके से छिन भिन कर सके। मगर ये ताकत बहुत कठिन है क्योंकि इसके लिए जो साधन जरूरी है दुर्लभ स्थिति के अलावा वे अभ्यास में नहीं लाए जा सकते। अगर कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए जो अपनी संकल्प बल और इच्छा शक्ति से इन कणों को छिन भिन कर सके तो वाकई वो दायरा निगाह से हट जाएगा, इसलिए कि निगाह छिन भिन हालत में उसके साथ हो चुकी है। मगर इसका इल्म या ज्ञान लाने के लिए ये बात भी जरूरी है कि वही निस्बत संबंध रखते हुए उन कणों को फिर इकट्ठा करके जिस्म का ढंग उसी तरीके से करे जो कणों को छिन भिन करने से पहले थी।
जनता की निगाह में ऐसा शख्स मुमकिन है कि न पैदा हुआ हो, मगर मेरा अनुभव प्रमाण है कि चंद ऐसी हस्तियां जरूर गुजर चुकी है। जिस वक्त कणों को चूर किया जाता है तो वो चीज जो बाकी रह जाती है उसकी कैफियत अदृश्य हरकत की हो जाती है, जिसमें उसकी संकल्प शक्ति सुप्त रहती है, जैसे कि सृष्टि की पैदाइश के पहले और प्रलय के बाद जो चीज थी वही सृष्टि के निर्माण का कारण बनी। इसी तरह से जो चीज कणों को छिनबिन करने के बाद रह जाती है वही फिर कणों को इकट्ठा करने का कारण बनती है और इसमें कोई सीमा बंधन बाकी नहीं रहता। Urdu will finish it. I think it was incomplete. अब इस पर्दे के बारे में सुनिए, वो क्या चीज़ है जो उसके असल राज जानने में हारिज हो रही है। जिस वक्त हम ईश्वर को का ख्याल बांधते हैं तो हमारी समझ एक दायरा बना लेती है और एक तरीके का दर कायम कर देती है। बस यही बंद है जो हर क्यों का जवाब नहीं देने देता। अब हम अगर कहीं इस ख्याल से बाज आ जाएं और वो इताह हमारे ख्याल से कहीं दूर हो जाए तो हम बारीक से बारीक बात मालूम कर सकते हैं। मगर इस दायरे के बाद एक दायरा और आता है जिसका परतू या अक्स ये दायरा है जो ऊपर बयान किया जा चुका है। जब हम इसमें घुस पड़ें तो उस जगह यानी मरकज़ की कैफियत नज़र आ सकती है, मगर इन खवीत का टूटना सिर्फ एक हालत में हो सकता है, यानी जब हम अपने ज़ारात को किसी तरीक़े से छिन भिन कर सकें। मगर ये ताकत अमर महाल है, इसलिए कि इन क़वाइद को पाबंदी जो इसके लिए लाजमी है नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए जो अपनी क़ुव्वत इरादी और इच्छा शक्ति से इन ज़ारात को छिन भिन कर सके तो वाकई वो दायरा निगाह से हट जाएगा, इसलिए कि निगाह छिन भिन हालत में उसके साथ हो चुकी है। मगर इसका इल्म या ज्ञान लाने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि वही निस्बत रखते हुए उन अज्जा को फिर इकट्ठा करके जिस्म की तरतीब उसी तरीक़े से करे जो ज़ारात छिन भिन करने से पहले थी। अवाम की निगाह में ऐसा शख्स मुमकिन है कि न पैदा हुआ हो, मगर मेरा अनुभव शायद है कि चंद ऐसी हस्तियाँ ज़रूर गुज़र चुकी हैं। जिस वक़्त ज़ारात अलहदा किए जाते हैं तो वो चीज़ जो बाकी रह जाता है उसकी कैफियत मख्फ़ी हरकत की हो जाती है, जिसमें उसकी क़ुव्वत इरादी पोशीदा रहती है। जैसे ज़हूर आलम के पहले और प्रलय के बाद जो चीज़ का पिन्हा थी फिर ज़हूर का बाहश हुई, इस तरीक़े से जो चीज़ का ज़ारात को छिन भिन करने के बाद रह जाती है वही फिर ज़ारात को इकट्ठा करने का बाहश होती है और इसमें कोई दर बाकी नहीं रहता। I'll read the English one. Under the Shahjahanpur system, our system of spiritual training, the teacher at the very outset weakens the downward tendency of the Abhyasi by the effect of his own power so that it may get automatically diverted towards the divine. This is the philosophy of training and also the foundation. This state of mind relates to the higher plane of consciousness, whereas the former one relates to the lower. This basic principle of spiritual training under the system may offer a chance to philosophers to ponder over. I have dealt with it very briefly. In this connection, I may quote the following remarks of a great saint. The Lord has closed upon man the door of every query. A poet has also said, one can acquire the intelligence of Saban, a Chinese philosopher, in eloquence and rhetoric, but none can attain to the knowledge of the real. I may say that when we ponder over God,
our imagination creates a circle around it. This is the knot which bars our approach to the answer of every question. If possibly we can get over this knot and remove the limitation of thought, then the subtlest things can be revealed to us. But there is also another circle within, for which this one is but a reflection. When we force our entry into that one, also the mystery of the center can be revealed. But the breaking through of these limitations will be possible only when one is able to shatter the particles of his being. But this is rarely possible, since the means required for the purpose cannot be brought into practice except in rare cases. If however, a person does come into existence who can do so by his will, then the circle will disappear from you, because the vision will, in its shattered state, become one with it. But in order to have a knowledge of it, it is also essential for him to be able to rearrange the particles of his being so as to assume a similar form of existence as it had before. Common imagination may not conceive of such a personality having ever been born, but my perception asserts that definitely a few such ones have come into existence already. The condition that exists after the shattering of the particles is similar to that of the latent motion, and his will lies dormant in it, just as it was before the time of creation, and will again be after Mahapralaya, complete dissolution. The same dormant will which caused creation to come into being will again lead to the readjustment of the shattered particles, and there will be no limitation then left. I think next Sunday we will start with the second commandment. First is the longest one, with a lot of metaphysics in that. But the main point, he said, I'm writing it in a very, he has dealt with in a very briefly, and he says philosophers to ponder over. Actually, the trainers and all that, they are supposed to, with their willpower, turn the tendencies of the mind, which is going towards finiteness, towards infiniteness, towards the God. That is the fundamental of training under the natural path. That is very significant. We should catch it, and it is a yogic skill actually, which each trainer should try to master it actually. Potentially is there, but if you keep on applying the will force and keep on purifying the mind, it is directly proportional to the purity of the mind. The more the person's mind is purer, the more godly energy will start operating through that mind, and more things will come into his awareness, and he'll be able to better serve humanity actually. So basically, it amounts to trying to remove the mala, vikshepa and avarna, and that is with the regular practice what we are doing. Any comments or anything? Just not a comment, just an observation, sir. Yes. So, I mean, while in reading this some paragraphs, I mean, somewhere it's been mentioned that as the thing gets lighter and lighter, and then the natural tendency is to go towards up, and then, I mean, up in the sense towards the source, I guess, in this case. Right. And, Like you, it is very simple, no? We all of us have an experience when we sit in the morning meditation
when our mind is in touch with God, and we feel the mind absolutely tranquil, and then there is only good thoughts will be coming. At that time, you feel like praying for that everybody should be happy, everybody should develop love and devotion. Those good thoughts will come, which will make you feel pleasant and happy. And because of that happiness, the mind, once it tastes that happiness, it wants to go to the source from where this happiness is coming. So that's the lighter thing. Lighter thing tends to go back to the source. That is the idea. All of us have that practical experience. That is why we are now, most of us are practicing for the last 10, 15, 20 years because of the lightness felt in the mind, which drags our mind towards God. This is practically everybody is experiencing. Yeah, I mean, I just want to quote that. Yeah. One more point, sir. He talks about in a very metaphysical way here that howsoever profound a thought is, it is limited in nature, and only when it ends, when the thought ends, the reality will be revealed. So, that is talking of a boundary. When we think about the God, the thought itself forms a boundary or a knot, he says. That is true. That is the reason why we actually, when real progress starts happening, you just surrender, and you don't even think about, you don't even make an attempt at meditation. You just surrender like a dead man in the hands of a dresser. In that state, then the mind is crossed. I mean, you transcend the mind, and then you get a glimpse of your true nature, actually. And if you make an attempt to know God, then the very, because intellect is, it is not possible for intellect to know God. The moment it makes an attempt, it hits into a barrier. You can yourself watch yourself. You try to think about God. Just try to think about the space, and then the immensity of space, and then infinity of space. Your mind goes blank, or it will not be able to think further, actually. So that is why when you surrender, then God comes. When God comes into you, then only you will be able to understand what is reality. By thinking, we can never reach. By thinking, reading, only in meditation, if you're practicing towards the direction of surrender and devotion, then what happens? You become like a person, like a dead person in the hands of a dresser. You don't even, the attempt to meditation is also surrendered, actually. Then only, there's no barrier between you and God. Then that knowledge comes to you. If you think, then that forms a barrier. That is why when your meditation you're doing, your divine light without luminosity is a concept which you cannot even think. So you have to suspend your thinking. Or you have to just surrender to that object and say, I do not know what does it mean by divine light without luminosity. So you just yield, and then just sit with an expectancy. Just like Dr. KCV has given a beautiful example. He says, when a guest comes to you, you invited him for dinner, and then he has not come. So you'll be eagerly waiting when he'll be coming, and then have food. In the same way, we are waiting for God, that's all. So we wait for the divinity. We rest our attention in the heart on the object of divine light without luminosity, and whatever the reality is will enter into you if you just wait on him. We are not thinking what he will be, what shape he will be, what kind of peace he will be, what kind of lightness or whatever. We are not even making any imagination about what is the kind of peace which is made up of, what is the kind of light which is made up of, what is the kind of gray or dawn color is made of. We are not thinking at all. Because the moment we think, we are putting a barrier between ourselves and him. The object chosen itself, that is why in yoga, there is, in Patanjali Yoga Sutra, there is one method of meditation called Virama Pratyaya. Virama Pratyaya is the object of meditation. Virama Pratyaya is, Virama is rest. You're not having
you have no object for meditation. That is one of the finest way of meditation, actually. Subtlest object in which you meditate. And Babuji is giving an idea similar to that. He is telling you divine light without luminosity is as good as negation. There is nothing there to meditate, except for the subtle idea. And that too, you're just supposing and you're living. That's all there. You're not making any effort to know what it is. You're just supposing and then leaving it there, and you're resting your thought on that supposition. And when you do that, then when you start enjoying that lightness, then naturally you feel like going back towards that becomes a lighter thing, which tends to move back to the source. That is why this is the only organization I've seen where people are meditating regularly for the last 3 or 4 or 5 decades. Whereas in other systems of meditation, people have gaps of 3-4 years. They have given up meditation because of the samskaras, the obstructions which they face in life. Even here, people who have been sick also, they have been meditating. That's the uniqueness of this. I think there's no group of people in the world except disciples of Sri Ramchandra who are leading a normal human life, doing all their responsibilities to family and society, and still without much break, they're practicing meditation for several decades. Whereas the Buddhists and all that, they have renounced their life. They have become monks. So they spend months and months in remote retreats for meditation and all that. But other people, I don't think there's case studies of people doing meditation for such long periods without any break. That is because of the power of transmission, which has turned their tendency towards God. And when the tendencies turn towards God, when you're meditating, you feel your mind becoming light, and it tends to enjoy more lightness. It tends to enjoy more peace. So it tends to, on its own, try to go back to the source, which it discusses in this commandment, commentary on this commandment. There's nothing else. We'll meet next Sunday.